Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. Today's topic is a little different. हम बात करेंगे trauma informed practice के बारे में. And it's slightly different from what I usually talk about, लेकिन it's equally important. So let's look at my favorite definition of what trauma is. The very famous author Gabor Mate, वो ये कहते हैं कि trauma is not what happens to you. Trauma is what happens inside of you as a result of what happens to you. The term trauma these days I believe बहुत ज़्यादा misuse भी होता है, बहुत ज़्यादा इस term का overuse भी हो रहा है. So it's very important for us to look at what exactly trauma is before we move on to trauma informed practice and you start to see how it is connected with autism. So if trauma is the result of a traumatic event, what exactly is a traumatic event? कोई traumatic event ऐसा incident या event हो सकता है जो कि negative हो, adverse हो, जो कि इमोशनली या फिजिकली लाइफ थ्रेटनिंग हो. कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जिससे इंसान गुजरे जिसका इम्पैक्ट उसकी ज़िंदगी में बार बार नज़र आना शुरू हो इन लिटिल चंक्स एंड बिट्स, दैट कैन बी नोन एज अ ट्रॉमेटिक इवेंट. And as a result of that traumatic event, that person could be experiencing either capital T trauma or small t trauma. Capital T trauma के अंदर हमारे major events आते हैं जैसे कि कोई car crash हो सकता है, कोई abuse हो सकता है. Whereas small t trauma is those minor events that may happen every now and then, as in for example किसी ने कोई बात कहती हो, किसी का कोई certain action जो कि आपको impact किया हो. और कोई ट्रॉमेटिक इवेंट ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने साथ हुआ हो. इट कैन ऑल्सो बी समथिंग दैट यू विटनेस्ड फॉर अनदर पर्सन हैपनिंग. ट्रॉमा हमारी बॉडीज़ में और हमारे माइंड के अंदर एक ऐसा रिस्पॉन्स इवोक करता है जो कि बेस्ड होता है फियर और अवॉइडेंस के ऊपर, एंड इट इम्पैक्ट्स आवर कैपेसिटी टू कोप. किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट से कोप अप करने की जो कैपेबिलिटी होती है, कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, एवरी वन इज स्लाइटली डिफरेंट, एंड what may be traumatic to one person may not be a traumatic experience to the other person. As a professional who is working with children with disabilities, it's very important for us to understand the importance of trauma and trauma informed care. क्योंकि जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ के साथ हमारे पास आते हैं या यंग एडल्ट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, स्पेशली दोज विद ऑटिज्म, ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कहती है कि दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक इवेंट्स एंड दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डेवलप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको PTSD कहते हैं. और इसके ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं, मेनी ऑफ विच आर वेरी ऑब्वियस टू अस एज वेल. देयर इज़ अ ह्यूज स्टिग्मा जो हम अटैच कर देते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ. सो इन अ सोसाइटी वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर न्यूरोटिपिकल, यानी कि विदाउट अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल विद ऑटिज्म टू फाइंड एक्सेप्टेंस. स्पेशली हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, एक ऑटिस्टिक बच्चे की फैमिली के लिए और उस बच्चे के लिए themselves. जब एक बच्चा ऑटिज्म के साथ डायग्नोज होता है, वो स्कूल जाता है, देयर आर मोर चांसेस फॉर देम बीइंग बुलीड बिकॉज वी डोंट हैव दैट फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन आवर स्कूल्स जहाँ पे एक प्रॉपर इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हमारे बच्चों को प्रोवाइड किया जाए. पीयर्स को भी इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया जाए, टीचर्स को एजुकेट किया जाए कि देयर इज़ your friend in your classroom, he just has some additional needs, like all of us have different needs, and this is how to support them. So a lot of our kids with autism do end up getting bullied a lot. Another main reason is that a lot of these kids cannot communicate. ये बोल नहीं सकते, अपनी feelings बता नहीं सकते, express नहीं कर सकते. Expressive और receptive communication इनकी इतनी develop नहीं होती. They struggle in that area. मुझे इस topic के बारे में इतनी ज़्यादा information नहीं थी until the last almost 2 years ago when I came to Australia and I found out how trauma-informed practice was a part of every single field, school से लेके medical care से लेके हमारी therapies से लेके everyone was talking about it, and that had my interest. And when I started looking into it, I found out how extremely helpful it is and how very much needed it is, especially in a country like Pakistan. The more I read about it, the more I found out कि बहुत सारी सिर्फ जहनी बीमारियां ही नहीं, जिस्मानी बीमारियां भी, physical illnesses की भी रूट कॉज जो है वो अब साइंस कहती है कि इट कैन बी अ ट्रॉमेटिक इवेंट और ट्रॉमा. आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर जो यहाँ पे ABA ऑस्ट्रेलिया की हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है. इस साल ब्रिस्बेन में थी, पिछले साल सिडनी में थी. सो आई ट्रैवल टू सिडनी टू अटेंड इट, एंड वहाँ पे पूरा एक पैनल डिस्कशन था ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर के ऊपर, जिसमें द प्रेजेंटर वॉज शेयरिंग द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड who was in therapy, and usually that individual would be a very calm child, koi aggressive behaviors nahi. One time when they were having their therapy session in their home and they were presented with a meal. और वो meal क्या था? I'll put up a picture here. It's called chicken cave. That meal was presented to the child and the child got extremely aggressive.
दे पिक्ड अप द प्लेट और उन्होंने प्लेट को उठा के फेंका है. नॉट एक्जैक्टली श्योर कि उस बच्चे की एज क्या थी, whether he was a teenager or a child, but they got so aggressive that they actually punched a hole in the wall, which was very unlikely them because they were usually very calm. Previously, उनकी जो बच्चे की mother हैं, she was going through a period of sickness and illness, and she was bedridden for a couple of months, जिसके अंदर वो बच्चा और उसका भाई they were extremely neglected. बहुत ही अनसैनिटरी कंडीशंस के अंदर, अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर वो दोनों बच्चे पड़े रहते थे क्योंकि मदर बेडरिडन होती थी और मदर की केयर भी चल रही थी. I'm not sure if this was happening in a residential care facility or if it was happening at home, but the kids when they were being fed at that time, तो उनको खाना भी ऐसे दिया जाता था जैसे कि हम डॉग्स को ट्रीट करते हैं, और वो उस खाने के अंदर उनको चिकन कीव प्रेजेंट किया जाता था. So the presenter was talking about how that event sort of triggered this response in him years later, जब वो सेम खाना उस बच्चे के सामने दोबारा प्रेजेंट हुआ. इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी ट्रिगर हो सकता है ट्रॉमा के लिए जो कि लिंक्ड हो किसी पास इवेंट के साथ. Now let's look at the types of trauma. There are 3 different types of trauma. Number 1 is acute trauma, जो कि कोई एक सिंगल इवेंट हो सकता है which would be very disturbing at the time of the event, and usually इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देखने में आता. इसकी एग्जांपल हो सकती है कोई कार क्रैश, कोई किसी किस्म का कोई स्ट्रीट क्राइम, गन पॉइंट पे यू गेट रॉब्ड, तो दैट इज अ वन टाइम थिंग एंड बट दैट मे कॉज acute trauma. Chronic trauma on the other hand is repeated and prolonged. इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो बार बार हो रही हो, जिसमें domestic violence आ जाता है. और complex trauma इस तरह से different है कि it is usually something that happens to a person in their childhood. So a child, when they are exposed to multiple traumatic events, it can basically rewire their brain. And the younger the child, जितना छोटा वो बच्चा होगा उस टाइम पे, the worse its impact is when they grow up. एक और टाइप जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, it's basically a category, that is historical trauma. And I think आजकल हम जो न्यूज़ में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, what's happening in Palestine. कोई भी ऐसा ट्रोमेटिक इवेंट या सीरीज ऑफ इवेंट जैसे कि वॉर हो गई, जेनोसाइड हो गया, जिसका इम्पैक्ट जनरेशंस तक जाएगा, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल ट्रॉमा. इसके अंदर एक एग्जांपल जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, मैंने पार्टीशन टाइम की डाली हुई है ऑफ 1947. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अस कैन relate to that as well. So it's very interesting to sort of look at the impact of that partition event on us as individuals. Now let's talk about adverse childhood experiences. यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको हम CDC भी कहते हैं, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर. इसके अंदर उनको ये पता चला कि 57% ऑफ द चिल्ड्रन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपीरियंस एटलीस्ट एक ट्रॉमेटिक इवेंट बिफोर द एज ऑफ 16, एंड 30% एडल्ट्स ने रिपोर्ट किया एक्सपोजर टू मोर देन 4 ट्रॉमेटिक इवेंट्स इन देयर लाइफ. अगेन ये अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स हैं. I don't have any statistics, unfortunately, for Pakistan, but I can only assume that we'll have some similar, if not more than these statistics. इस स्टडी ने हमें बेसिकली ये बताया कि जितने ज़्यादा एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एक बंदा एक्सपीरियंस करेगा ऑफ कोर्स चाइल्डहुड के अंदर, उतने ज़्यादा दे आर प्रोन टू सफरिंग एडवर्स एक्सपीरियंसेस जब वो बड़े हो जाएंगे. आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि कौन सी वो 3 कैटेगरीज हैं जिसमें एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस फॉल करते हैं. नंबर 1 इज अब्यूज़. अब्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो हमारी कम्युनिटी के अंदर नॉर्मली समझा जाता है कि अब्यूज़ सिर्फ सेक्सुअल और फिजिकल हो सकता है. कैन बी इमोशनल एज वेल. सो समथिंग दैट यू से टू अ पर्सन, द वे दैट यू ट्रीट देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स कैन कॉज सम लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉमा एज वेल. निगलेक्ट की जहाँ तक बात आती है, निगलेक्ट साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल हो सकता है. कोई भी ऐसी फैमिली जिसके अंदर एक बच्चे की फिजिकल नीड्स, जैसे कि उसकी स्लीप का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उसके खाने पीने का ख्याल नहीं रखा जा रहा, या कोई ऐसा इन्वायरमेंट जो कि उसके लिए इमोशनली बहुत हॉस्टाइल हो, तो वो निगलेक्ट में काउंट हो सकता है. हाउस होल्ड डिसफंक्शन का इसमें एक सेपरेट कैटेगरी है जिसके अंदर इफ अ पेरेंट हैज सम मेंटल इलनेस एंड दे आर नॉट एबल टू लुक आफ्टर दैट चाइल्ड, क्लोज रिलेटिव या पेरेंट फिगर, इफ दे आर इन जेल ड्यू टू सम क्राइम, that can also come under household dysfunction. अगर मदर के साथ एक violent treatment किया जा रहा है, it could be from anyone in the household, that can create household dysfunction.
कोई किसी किस्म का ड्रग अब्यूज़ होता हो घर के अंदर, डिवोर्स या सेपरेशन। रिसेंटली अ केस एट द सेंटर जहाँ पे एक बच्चा दे स्टार्टेड एक्टिंग आउट ऑल ऑफ अ सडन, बिहेवियरल इश्यूज ऐसे आना शुरू हो गए जो कि हमने पहले कभी नहीं देखे थे। And we tried all sorts of things to identify where it was coming from, but we couldn't exactly pinpoint until the mom told us that the mom and dad, they are going through a separation at home, and that sort of put a lot of things into perspective, because again, these kids, they don't have the language abilities most of the times to convey how they are feeling and what's going on, and it can be the cause of a lot of behavioral issues. इसीलिए मैं आज इस बारे में इतना ज़्यादा बात कर रही हूँ कि हम एक बिहेवियर एनालिटिक लेंस से चीज़ों को देखते हैं। तो बिहेवियर एनालिटिक लेंस थोड़ा सा हमारा जो विजन है वो लिमिटेड ऐसे कर देता है कि इफ द बिहेवियर इज अकरिंग ड्यू टू अटेंशन सीकिंग, इफ इट्स अकरिंग ड्यू टू एस्केप, इफ इट्स अकरिंग कोई चीज़ उस बच्चे को चाहिए इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज नाउ स्टार्ट लुकिंग एट what's happening below the surface as well. Because the thing is कि हम अपने clients के बारे में, बच्चों के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर सकते। कभी भी हमें ये नहीं पता चल सकता कि उनकी हिस्ट्री में 100% क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें से कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर ट्रॉमा। एज क्लिनिशियंस, इफ यू वांट टू engage in trauma informed practice, you need to start assuming that every child that walks into your clinic has experienced the risk factors for trauma. Now, this is an assumption that you are making, but it's a very safe assumption to make. तो सिर्फ ये अज्यूम नहीं करना, हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर इस चीज़ को लेके आना है कि हम उन बच्चों को बेहतर तरीके से सर्व कर पाएँ। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए इन प्रिंसिपल्स के थ्रू, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, ट्रॉमा इन्फॉर्म प्रैक्टिस के क्या प्रिंसिपल्स हैं। बट कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि आपकी सर्विसेज ऐसी हों जो कि मिनिमाइज करें, अवॉइड करें कोई भी रीट्रॉमेटाइजेशन, और facilitate करें participation in therapy, so that every child that comes to you is happy, they are relaxed and they are engaged. Okay, now let's talk about the key principles of trauma informed care कि हम trauma informed care कैसे provide कर सकते हैं अपने sessions के अंदर। Number one point that I want you to think about is ensuring physical and emotional safety and trust. I say this in a lot of videos कि जब हमारे पास ये बच्चे आते हैं हमारी थेरेपी सेशंस के अंदर, बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे साथ सेफ फील करें, ट्रस्टेड फील करें, और एक ऐसा इंसान जो कि उनको हमेशा पुश कर रहा है चीज़ों में, उनको फोर्स करके बिठा रहा है, उनको फोर्स करके अपने थेरेपी रूम्स में लेके आ रहा है, उसके साथ वो कनेक्शन और वो सेफ्टी और वो ट्रस्ट वो बच्चा फील नहीं कर सकता। सो इन ऑर्डर टू हेल्प दीज यंग पीपल फील सेफ फिजिकली एंड इमोशनली, कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो वो आप ये कर सकते हो कि एक तो यू नीड टू सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट योर फिजिकल इन्वायरमेंट। For example, if a child has had a traumatic experience around darkness, especially OT rooms के अंदर जब हम sensory exposure दे रहे होते हैं, sometimes the room is dark, so it's very important to sort of look at कि वो बच्चा सिर्फ एक sensory aversiveness show कर रहा है, या थोड़ा सा हम अगर डीपर देके जाएं तो मे बी देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एसोसिएटेड विद दैट डार्क रूम। अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें बच्चे के साथ। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, प्रिडिक्टेबल हैं उस बच्चे के लिए, दे आर मोर लाइकली टू फील सेफ विद यू। अगर आप बच्चे के प्रेफरेंसेस को माइंड में रख रहे हैं, उनकी लीड फॉलो कर रहे हैं, और फिर जो चीज़ उनको पसंद है उसके थ्रू आप अपनी इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करवा रहे हैं, that sort of helps you build that relationship with them. Previously हम as ABA therapist एक strategy यूज़ करते थे जो कि I believe अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसको हम कहते हैं planned ignoring। आपने बच्चे को कहा कि you can't have your toy car right now because we are working. The child flops to the floor, they start crying, they start screaming, and to the extent that because their screaming and crying is not working, because you are ignoring them, they engage in headbanging. If you are in a moment of distress and you are crying because you cannot cope up with someone telling you no, how would you feel if that person then starts to ignore you, especially if that person is your only source of comfort in that moment and they are no longer giving you eye contact, they are no longer looking at you? How will you feel? Similar experience हो सकता है उस बच्चे के लिए, especially if they have experienced some form of trauma, any form of abandonment from a person who is supposed to be their caregiver in that moment can elicit all forms of trauma responses. It can be a huge trigger for that child. We have slowly moved away from this concept that attention maintained behaviors need to be ignored. They don't. We need to shift our perspective from looking at them as attention seeking to looking at them as
connection seeking behaviors. अक्सर ऐसे बच्चे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है ट्रॉमा, दे फील लाइक देव लॉस्ट देयर सेंस ऑफ कंट्रोल. इसीलिए जब वो सेशंस में आते हैं, देयर इज ऑलवेज समवन एल्स हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल देम. ये चीज़ें फिर सिमिलर फीलिंग्स ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल को ट्रिगर कर सकती हैं, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ दीज किड्स एक्ट आउट इन आवर सेशंस. इस कंट्रोल को रीएस्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं सेशंस के अंदर, हम किस तरह से ये शेयर्ड कंट्रोल दे सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं कंट्रोल उस बच्चे के लिए. जब एक बच्चा इमोशनल आउटबर्स्ट शो कर रहा है, उसको देखें एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. स्टॉप लुकिंग एट द बिहेवियर एज द प्रॉब्लम. द बिहेवियर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू दैट देयर इज अ प्रॉब्लम. बच्चों के रूटीन्स को प्रिडिक्टेबल बनाएं एंड ट्राई टू लर्न व्हाट द ट्रिगर्स आर फॉर एवरी क्लाइंट. फॉर एग्जांपल, कोई किसी किस्म की किसी थेरेपिस्ट की ऊंची आवाज़ उस बच्चे के लिए ट्रिगर हो सकती है. सर्टेन पर्टिकुलर परफ्यूम दैट द थेरेपिस्ट इज वेयरिंग कैन बी अ ट्रिगर फॉर देम. And especially being told that they can't do something. So being told no can be a big trigger for a lot of our kids. A lot of our kids, especially the ones with disabilities, उनको हम मना हर चीज़ से बहुत ज़्यादा करते हैं. तो हमें नहीं पता इस एक एक्शन की वजह से उनकी बॉडीज़ के अंदर कितना ज़्यादा ट्रॉमा स्टोर हो जाता होगा. सो इन दी एंड व्हेन दे गो टू स्कूल और व्हेन दे गो टू थेरेपी सेंटर्स, वहाँ पे भी जब उनको कोई कहता है कि नो, यू नॉट सपोज टू डू दिस, and they get into an emotional outburst, that's basically a trauma response. बच्चों की programs के अंदर आप इस तरह के goals और targets introduce करा सकते हैं जहाँ पे they start to recognize and verbalize their feelings. In order to teach them emotions, it's important for them to label emotions on other people first. यानी कि pictures के through और videos के through आप बता सकते हैं happy, sad, angry, all these emotions can be taught before the child starts to notice them on their self. जहाँ तक हो सके demands और commands को reduce कर दें सेशन के अंदर, and whenever you are talking to them, use simple, clear and calm communication. And always use the least restrictive procedure when you are supporting that individual during a moment of crisis. For instance, if a child is mouthing a ball, यानी कि एक इतनी बड़ी बॉल है जिसको वो मुंह के अंदर ले रहा है and they are chewing on it, instead of sort of reaching out and grabbing the ball from them, ट्राई करें लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड की. इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऐसा मेथड कौन सा यूज़ हो सकता है पहले, जिसके अंदर कम से कम मेरी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो. इस लैंग्वेज के अंदर बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हो, यू कैन यूज़ दैट एंड यू कैन से आउट, और यू कैन टैप ऑन द बॉल एंड यू कैन से गिव इट टू मी, और उसके बाद यू कैन गिव देम अ वर्बल वार्निंग फर्स्ट बिफोर टेकिंग द बॉल अवे फ्रॉम देम. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज कि आप वो बॉल उससे क्यों लेना चाह रहे हो. वो चोकिंग हैजर्ड तो बन नहीं सकती, ठीक है. तो क्या ज़रूरी है कि आप फिज़िकली इंटरवीन करें. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू सॉर्ट ऑफ कीप इन माइंड कि फिज़िकली इंटरवीन करना कहाँ कहाँ ज़रूरी है और कहाँ कहाँ नहीं है, बिकॉज हर जगह ज़रूरी नहीं होता. इस फील्ड में हम काम करते हैं, हेल्थ केयर और ह्यूमन सर्विसेज के अंदर ये फील्ड आती हैं, तो उस फील्ड के अंदर लाइक्लीहुड इंक्रीज हो जाता है ऑफ इनकाउंटरिंग समवन with trauma. और आपके पास एक तरह से you have the ability to make a positive change in someone's life. Traditional ABA again, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल भी recognize नहीं करता था ट्रॉमा को because it's an inside event. तो वहाँ पे ये इशू आता है कि हम अपनी RBT trainings के अंदर या कोई भी ABA से related trainings के अंदर हम trauma informed practices की बात नहीं करते. We need to start doing better within our ABA sessions, within our speech sessions or OT sessions. There's a picture that I came across a couple of days ago which shows a healthy brain versus an abused brain. So this is not something जो कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं. We have tons and tons of research that is telling us that the brains of people who have experienced trauma are wired differently than someone who has not experienced trauma. But as sad as it may be that this is what it looks like, what I also want you to think about is that the human brain is capable of being rewired as well. जितने positive experiences, जितने safe experiences उस बच्चे की ज़िंदगी में होंगे, there is always a chance for the brain to be rewired and become a healthy brain. So that responsibility is on us. It's on you that you use this information that you have learned today and you pass on this video to as many people as you can. अगर आप इस topic के अंदर और interested हैं, before I go, I just want to share my two favorite books. This one still has a bookmark, so I'm still reading it. But Gabor Mate, जिनका मैंने quote आपके साथ share किया था. I'm sorry if you can see this flipped, but it's basically The Myth of Normal. By Gabor Mate. He talks about trauma, illness and healing in a toxic culture. This book also talks about कि कितनी हमारी physical illnesses ऐसी हैं जो कि trauma की वजह से cause होती हैं and we don't even know yet. So the second book is The Body Keeps the Score by Bessel van der Kolk.
I hope I'm pronouncing that name correctly. Basically tells you how trauma gets stored inside the body and then manifests later on in life. Both are really good books if you're interested in learning more. So thank you so much for watching and joining me today for this conversation, and I will see you in my next video.